often called the second capital of Maharashtra, is a city steeped in history and culture. The Orange City has been a crucible of India's nationalistic movements, with the Rashtriya Swayamsevak Sangh headquartered here since 1925. Today, Nagpur is known for its IIM and AIIMS. So the city of oranges has seen a sudden increase in the number of educational institutions as well in the last few years in particular. So there is an AIIMS, a triple IT and an IIM in Nagpur. I am right here at the beautiful and sprawling campus of IIM Nagpur with a group of students who are the present batch of students of IIM Nagpur. So let's talk about the issues that will decide your vote, because these are young Maharashtrians and also someone who's from Karnataka. So he'll try and give his own perspective of what he thinks is going right in the state vis-a-vis his own state of Karnataka. So let's start. What are the issues that will decide the vote of youth like yours? So ma'am, the first issue that I think will decide the votes of youth is employment. So I come from the area of Vidarbha, from the region of Vidarbha. And usually if you complete your engineering from Vidarbha, the first thing that you have to do is travel to Western Maharashtra in Pune or Mumbai for jobs. So creating a job atmosphere here will be a key issue that I think will be prominent in this elections. What about you? Ma'am, I also think on the same lines, like the migration issue that is over there, the urbanization, because majority of the jobs that are available are there in the region of Western Maharashtra. I come from the farmer background, farmer family background, so farmers' suicide rates and all those issues are some of the bigger aspects of the Vidarbha region. But in Vidarbha, hasn't the overall farmer suicides come down? The concerns of the farmers are being addressed? Yes, ma'am. Somewhere the efforts have been taken by the governments, by the various governments over the period of time. 50% of the Maharashtrian population is working in agriculture domain or the areas around it. Also, most of the farmers here, based on the Maharashtra geography, it's like they are more based on the rainfall, how the monsoon season goes. So if we look at that perspective, there has been many initiatives taken. Also, there has been improvement irrigation front. on the irrigation front and also on the crop management systems. So there has been a scope of improvement also, and the areas of development where Maharashtrian government is also working. How optimistic are you about your own future? Okay, so as an MBA graduate, I have many of us dream of starting a startup and entrepreneur. Maharashtra has the most number of startups in India, the highest number of startups, and as a Gen Z, I would like that Maharashtra government should leverage this fact of the highest number of startups that a state has, and also Maharashtra government should also focus on women education. There have been schemes recently that have been focusing on providing freebies to women. Yeah. So instead of that, the government should focus on the long-term growth of a woman and should focus on women education. Okay, that's actually very well put. You're from Karnataka. Yes, ma'am. And as someone who's studying in Maharashtra, you know, there are students here and they have very interesting viewpoint, particularly to do with migration. Would you also consider yourself as a migrant who has traveled from Karnataka to Maharashtra for education? Well, of course, if I go by the textbook definition of migration, I believe I am a migrant. But if I may add, since I come from a state that has a lot of startups, a lot of wonderful higher education institutions, Maharashtra is a place which I believe is no less, because it contributing 1/5 of India's GDP, and as long as I'm having opportunities, I don't have any issues being a migrant. So is this the language of the youth of Maharashtra? Or are you guys exception because of where you are studying? The main issue is not caste. It is just about the job, and everyone has their own responsibilities that they have to provide. So I think that is the main focus that the youth is upon. So you would have gone through the guarantees of various political parties and the two alliances, Mahayuti and Mahavikas Aghadi. What is it, do you think, in there for the youth? And what do you think which are the two sides and who is more promising and more convincing? I'll not say who is more promising or convincing, but I see a lot of skill development initiatives that the government that will be formed in Maharashtra has to start. And as far as the women
are concerned, young girls like you, aspirations, yes. What about the issue of safety security? I am from Nagpur, and of course, my parents are really concerned about me when it comes to safety and security. And when it comes to Maharashtra, I think there is a need for improvement. Among the leaders, who do you think is there on the horizon of Maharashtra who appears to be aligned with your thoughts? I would say instead of focusing on a leader, I feel the parties, all the parties, if we look at the past history of and the past election itself, a lot of time is spent on things which are not actually the focus of the youth. I would say, for example, during the last election, a lot of time was spent on forming the majority itself, and that is a very key time that is lost, in which other states will take up the majority of the investment. For example, there were certain semiconductor projects also, which is like a new upcoming industry for India, which India is targeting, and Maharashtra lost those key projects because the governments were focused on other things. You're looking for stability. Do you think that's important? Yes, as a voter also, and if we look from the perspective of foreign direct investments, FDIs, they also look at these factors, whether the government is stable or not, whether the decision making, the incentives which they are providing would be in their favor or not. So these are some of the key factors. On the campus, we meet two startup owners. 29-year-old Dhruval Seth did BTech in agriculture from Ratnagiri and then worked for Mahindra and Aisha for 10 years before starting Tractor Seva in 2023 with seed capital of 85 lakhs. With the support of InFed, the incubation center on IIM campus, he raised 1.5 crore rupees. Today, he has a network of 30 franchises across Maharashtra. Vijay's Mitra Sena has a similar success story. Both of you are into startups. Both of you have your own startups. Is it good business and good economics as well? Yeah, of course. Starting a startup is like initially it's obviously a difficult part, but for the future thing, you get those opportunity to know in and out of the business. I come from a background where I work for brands like Mahindra and all, but you don't get exposure of each and every part. But here, when you are running a startup, you get exposure of every single parameters. You come to know how a company or organization runs. You become that core part of it. You become that person who empowers people, who gives jobs. You are responsible for number of families. So how many families are you responsible for? Right now, 23. So 23 फैमिली एट मंथ. वो एक टाइम होता है ना कि मंथ एंड पे सैलरी क्रेडिट होती थी, अब मंथ एंड पे सैलरी क्रेडिट करवानी है. तो दैट इज़ द डिफरेंस. वो अगर एक्सपीरियंस करना है तो मोस्ट वेलकम, आपने स्टार्टअप करना ही चाहिए. सो एज फार स्टार्टअप एंड MSME, ये जो हमेशा इक्वेशन आता है, द गुड पार्ट अबाउट स्टार्टअप और हाउ स्टार्टअप started, the idea about startup is we have always been told follow your passion. How do you follow your passion? So you start something on your own, but initially there's a lot of risk to follow your passion. Yeah, so that is why the startup ecosystem developed. What used to happen before was when I wanted to start a business in the traditional or conventional MSME mode or the general business mode, you did not have those mentors to guide you how to go about it. You were on your own. You did not know how to swim, but you were thrown in it, or you jumped on your own. Now what happens is you get the entire ecosystem where there are mentors, how to go about your business. You get industry experts. Talking about the skill development and all, I work into a rural market area. Tractor Seva particularly works into rural market, जहाँ पे आजकल कोई ब्लू कॉलर जॉब करना ही नहीं चाहता. एवरीवन वांट टू सिट इनटू अ लैपटॉप पे बैठ के काम करना है सबको. वहाँ हम लोग मैकेनिक को वो प्राइड देना चाह रहे हैं कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो बुलेट चला रही है गांव में, उसको वो डिग्निटी मिलनी चाहिए. उसका लड़का वो मोटिवेट होना चाहिए कि मैं भले वो कुछ नहीं बुलेट ही घुमा रहा है गाँव में, वो गाँव में बैठे बैठे वो भी उस चीज़ का काम कर सके, मैकेनिक का काम करने में उसको भी प्राइड हो.
वरना वो स्किल की मतलब वो स्किल ही खत्म हो जाएगी। आपके पास मैकेनिक मिलना रूरल पार्ट में वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और वो एंड ऑफ द डे फार्मर के लिए परेशानी हो जाती है। How much is the government supporting, and do you think the policies of the government are good enough in terms of that support that is needed for young startups like yours? Of course, government has been supporting us. ये incubation center is one of that part. But funds release होने में, मैम, to be very true, it has become a too longer time. जो fund release की जो time period है, पिछले साल भर से 2 साल से funds नहीं आए। तो जो गवर्नमेंट से एडिशनल सब्सिडीज जो मिलती थी, जो पहले थी भी शायद 2-3 साल पहले तक कॉन्स्टेंटली आ रही थी, पिछले साल 1.5 साल से वो आई नहीं है। तो स्टार्टअप लाइक अस जो इंक्यूबेटेड हो चुके हैं, उनको अभी गवर्नमेंट से कोई फंड डायरेक्ट रिलीज नहीं हुआ है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। Nagpur is the heart of Maharashtra, a region in Maharashtra, and its significance cannot be overstated. Vidarbha contributes 62 seats in the 288-member Maharashtra Assembly. A traditional stronghold of the Congress, the party lost its grip from Vidarbha in 2014 Assembly polls when the BJP won 44 out of 62 seats and Congress won only 10. The Congress recovered in 2019 by winning 15, while the BJP dropped to 29. Of the 103 seats that the Congress is contesting in these polls in Maharashtra, it has the highest number of candidates, which is 40 in this region. On most seats in Vidarbha, it's a direct contest between the BJP and the Congress. Kanchani means Lakshmi. And these farmers are hoping that money will continue to flow to them through this farmer-producer company. What started as an experiment in 2017 with just 90 farmers, today has the support of nearly 8,500 farmers of Chandrapur district. Its founder, 41-year-old Balaji Dhobe, proudly speaks about doing away with middlemen and commissions. Money now comes directly into the pockets of the farmers. विदर्भ के बारे में हमेशा कहा जाता था कि यहाँ पे फार्मर्स सुसाइड्स बहुत होते हैं, इसीलिए ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा इलाका इसी के लिए जाना जाता है या बदनाम है, जो बोलिए। तो ये जो आपने किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे हमारे यहाँ पे जो किसान है, हम मोस्टली ऑयल सीड्स, पल्सेस और कॉटन में काम करते हैं। तो हमारी ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इन क्रॉप को बेचना यानी मार्केटिंग हमारा सबसे बड़ी समस्या है। तो मार्केटिंग संबंधित, जैसे हम लोग एपीएमसी में माल ले जाते हैं तो 1.5% दलाली लगती है पहला। दूसरा, अगर हमें जल्दी पेमेंट चाहिए होती है तो 1 से 1.5 रुपये उसमें भी कटता है, 1.5 + 1.5 3 रुपया हो गया। और तीसरा, अगर हम सोचे तो हमारे एरिया में कंपटीशन नहीं था, नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स या नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स कम थे, इसलिए जो रियलाइजेशन था प्राइजेस का वो ऑलमोस्ट 4 से 5% नीचे था अच्छी मंडी से। ये तीसरी प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम था पेमेंट रिलेटेड इशू। पेमेंट, अगर आज माल बेचो तो हमें जो पेमेंट रियलाइजेशन होता था वह 21 दिन या 25 दिन के बाद में होता था, यानी ऑलमोस्ट महीना लगता था, बराबर है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम पर काम करने के लिए हम लोगों ने कंपनी की शुरुआत की। एक फार्मर से शुरू हुआ और आज कितने फार्मर हैं? आज लास्ट ईयर की बात करें हम तो हमारे को 8,500 किसानों ने उनका उत्पाद हमें दिया था लास्ट ईयर। ना मैम, सुसाइड रेट तो कम नहीं हुआ है, वैसे ये फैक्ट्री की जो वजह से अगर बोलना है तो वो नहीं हुआ, लेकिन जो कंडीशन है, फार्मर कंडीशन जो है पहले से अच्छा हो गया, आज वो बेहतर हो गया, किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा है। सिर्फ बताने के लिए है, चुनाव आएंगे तो किसान को वो करेंगे, ये करेंगे, और बाद में जब चुनाव जीत जाएंगे उस टाइम कुछ नहीं करेंगे। ये 2000 लो, ये महिला को लाड़की बहन दो, वो दो, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं तो लेकिन लाड़की बहन से तो महिलाएं खुश हैं। नहीं, क्यों नहीं खुश नहीं है? सरकार ने तेल के भाव बढ़ा दिए, जो अब खाने की चीज़ें हैं उनके सबके भाव बढ़ा दिए। वो हमसे ही निकाल रहे, वो पैसे 1500 दे रहे हैं और हमसे ही निकाल रहे, क्या फायदा फिर? जो महिला किसान है उनकी समस्या क्या है? किस इशू पे वोट करेंगी? उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? कौन बोलेगा? दीदी बोलेगी?
हमें तो क्या लगता है कि सिर्फ ने क्या हमारे माल को भाव चाहिए और कुछ नहीं। क्या जो देना है 10,000 पर क्विंटल कापूस, 5,000 ऐसे अलाउंस कर देना चाहिए सरकार ने कि नहीं, सरकार ये परमानेंट भाव रहेगा, नहीं कम होगा नहीं ज़्यादा होगा। ऐसे करेंगे तो किसान लोगों की थोड़े फायदा होगा, नहीं तो किसान सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे तो श्री का जाए, किसान तो मर ही जाएगा ना। Vidarbha has been grappling with a severe agrarian crisis, leading to a high number of farmer suicides. In 2023, over 2,850 farmers took their lives in Maharashtra, with 50% of those coming from the Vidarbha region. 60 kilometers from Nagpur, these orange and sweet lemon farmers are unhappy with their local MLA, Maharashtra's former Home Minister Anil Deshmukh. NCP Sharad Pawar faction has fielded his son, who is making his electoral debut. यहाँ का जो विधायक है अनिल देशमुख 25 साल से जो उन्होंने कुछ भी काम नहीं है, जीरो नहीं सब ये ओके। महाराष्ट्र ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो महायुति को कमजोर किया था, महाविकास आघाड़ी को मजबूत किया था, तो जो नाराजगी थी उस वक्त वो अभी भी है? नहीं, अभी नहीं है। वो पहले क्या किया था, जो हमारे अल्पसंख्यक जो लोग थे, जो जैसे एससी, उन्होंने जो विरोधक है जैसा महाविकास आघाड़ी, उन्होंने ऐसी अफवाह फैसलाई थी क्या जो 400 पार उनको दे दिया हाथ में तो अपना जो संविधान है वो बदल देंगे, संविधान बदल। एक्चुअली तो वैसे केंद्र सरकार वो संविधान तो कोई बदल नहीं सकता। इन्होंने कांग्रेस के जो नेहरू गांधी के 72 चलाया था, जिसके बारे में जनता को बाद में पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो गुस्सा उस वक्त था, अब नहीं है? अब नहीं है। वो नैरेटिव चला था एक 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जनता ने भी मान लिया था उस टाइम, लेकिन बाद में पता चला कि संविधान धज्जियां तो राहुल गांधी खुद उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार महायुति की सरकार बनने वाली है। हाँ, जो अभी आपने बताया था कि हर रीजन महाराष्ट्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ पे मैडम कभी भी एक पार्टी की सत्ता कभी नहीं बनती, क्योंकि क्या होता है ना कि आप मराठवाड़ा जाओगे तो वहाँ पे शरद पवार स्ट्रांग है, आप विदर्भ आओगे तो यहाँ पे बीजेपी या नितिन गडकरी जी स्ट्रांग है। ऐसे ही हर एरिया में एक एक पर्सन स्ट्रांग है, तो हर एरिया में अपने अपने लोग आ जाते हैं। तो हर एरिया में एक चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कभी भी एक पार्टी बहुत मुश्किल है जो आएगी। तो यहाँ पे वो नैरेटिव है कि बीजेपी यानी शिवसेना और शिवसेना यानी बीजेपी, तो आप कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हो? तो ये लोगों को भी पता है। युति बना के ही लड़े थे, युति बना के ही लड़े थे ना। उसकी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी, इसलिए वो दूसरों के साथ चले गए। लेकिन जब इलेक्शन लड़े थे तो असली शिवसेना क्या है? असली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही समझेंगे। 2024 के लोकसभा में इतना नाराजगी थी, यही जो तोड़ जोड़ जो हुआ था उसकी वजह से नाराज थे यहाँ पर लोग। महाराष्ट्र में जब हम लोग घूम रहे थे तो वो सब एक उस वक्त था कि शरद पवार के लिए सिंपैथी है, उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी है। 60 साल से कांग्रेस यहाँ पे राज कर रही थी, 60 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, इसलिए 10 साल से जब मोदी जी यहाँ पे पीएम बने, मोदी जी ने जो देश की ताकत बढ़ाई, हाँ, वो हटाने के लिए वो अभी इस बार 15 साल हो गए, 15 तीसरे रेजिम में पीएम बने, ये होने नहीं देना था उनको। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उन्होंने, मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, और जो देश अच्छे लाइन पे ला रहे, जो देश का नाम बढ़ा रहे, वो उनको होना नहीं था। 60 साल में कुछ कर नहीं सके, इसलिए वो निगेटिव फैलाया था, और ये सब मिलके महाराष्ट्र को तोड़ने की उनकी ये थी। 48-year-old Umesh Bande, a graduate, owns 65 acres of land, and 70-year-old Srinivas Shukla has 6 acres of land. Both say farming today has become unsustainable. बार किसानों के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हर बार कहा जाता है विदर्भ के किसान नाराज चल रहे हैं? हाँ मैडम, बात ऐसी है कि पिछले 25 सालों में हमारे यहाँ तो प्रॉपर काटोल विधानसभा क्षेत्र में ना संतरे पे कुछ प्रक्रिया उद्योग आया है, ना मौसम्बी पे कुछ प्रत्यय उद्योग आया है। इसलिए किसानों की डिमांड ये है कि किसानों को अच्छे से अच्छा भाव मिले, चाहे संतरा हो, मौसम्बी हो या कपास हो। तो ये मौसम्बी का शहर है, नहीं ये संतरे का शहर है, लेकिन फिर भी लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र की सरकार हो या यहाँ की जो अभी महायुति की सरकार है वो किसानों के लिए बहुत कर रही है।
नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि महायुति की सरकार नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी कहना चाहिए कि आज 25 साल से काम यहाँ पर जो भी विधायक बने, उनने आज तक कहना चाहिए कि कुछ भी यहाँ का लेखा जोखा नहीं लिया। कौन है विधायक? विधायक वही अनिल बाबू देशमुख। हमारे तो ऐसे खेत हैं मैडम कि जहाँ पे कहना चाहिए कि हमारी बैलगाड़ी नहीं जा सकती, इतने रास्ते खराब हैं, माल की छोड़िए नाम। हमारे जो युवा है, एजुकेटेड हुआ, अच्छा 10,000 की नौकरी करने नागपुर चला गया, मुंबई चला गया, लेकिन वो खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि खेती में उसको जो मिलना चाहिए प्रॉफिट मेहनत का, वो नहीं मिल रहा मैडम। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बीए पढ़ा हूँ मैडम, ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेजुएट मैडम। और कितने साल से खेती में लगे हुए हैं? मैं 2017 से खेती में हूँ। तो फायदा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं मैडम, मैं अपना घर तक नहीं चला पाता। 70 एकड़ खेती जोड़ता हूँ, 4 लाख 5 लाख हर साल घाटा खाता हूँ। और मैं अभी एक बात और बताना चाहता मैडम कि हमारे बगल में देवेंद्र भुयार नाम की विधायक जो चुन के आए थे, पीक विमा का जैसा जो योजना है किसानों को, योजना का भी लाभ हमारे काटोली विधानसभा क्षेत्र में कभी मिलता नहीं है। कि एक तरफ ठाकरे हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, कौन असली सेना है? नहीं मैडम, वो तो अब ऐसा है कि कहना चाहिए कि ये राजनीति है, इसमें हम नहीं उतना समझ पा रहे हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो गवर्नमेंट बनेगी, अब जो भी सरकार बनेगी, और हमको तो विश्वास है कि अब कहना चाहिए कि यहाँ पर भी ये महायुति की सरकार बनेगी, क्योंकि किसान बहुत परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया है कि उसको ये शासन बदलाना है। Battle for Vidarbha is crucial for both the alliances, Mahayuti and Mahavikas Aghadi. And that's why all demographics and every vote counts. Both sides have made several announcements for all groups. The startup culture seems to be catching up with women as well. And in Nagpur, I have 3 very fascinating women who are all startup owners. They started their startups at different years, but they have success stories to share. So let's get their stories. So let me start with you, Dhanushri. How has the journey been as a startup owner? Oh, as a startup owner, it has taught me a lot of things actually. I was into working before this, and now after being into entrepreneurship, it has brought out the better version of my behavior and everything. From BTech to owner of this Dobby the Chef. The company is Point Tales Limited, under which we have accessories, we have food products, we also have shampoos and skincare, hair care products. And all for pets. All for pets. And that's a pet mother talking. Yeah, that's a pet mother talking. Started in 2018. It's actually, the pet industry is growing right now in such a way. It's a gold mine that I am kind of sitting on. So I need to, dig in deep for it. As someone who is into the farming sector, what are the challenges? Lot many challenges, because in agriculture sector there are very few ladies working in this sector, so we have to face lot many challenges regarding marketing. Then if you want to hire a woman-led startup team, then the security comes first, then marketing also challenge, fundraising, even when the crop is ready, but there are so many natural calamities that our many times our demo plots are lost. So even in field testing, it takes around 3 to 4 years. So it takes lot of time in agriculture sector to get established ourselves as an founder of Saptaranga Research and Organic Private Limited. Being a woman in, again, a very, very unique sector, which is metallic and ceramic. Yeah, basically being a researcher, it was a dream for me all the time to make some venture out of it. Because many times you see that, yes, researchers are there into the lab only. It never come to land. It rarely happens. So that was my dream. So this is what a venture out of my research. And definitely this is B2B. Service business, so wherein I am taking care of all ceramic, metallic and polymeric processing units, wherein I am treating those components and making its life double or triple, so that if something is lasting for say 6 months, I am making that life to a year or so. Okay, Kavita, we hear a lot about नौकरी नहीं है, jobs नहीं है, unemployment बढ़ रहा है.
आप लोग employment generate कर रहे हैं. You all are employment generators. What will you tell those who keep complaining about jobs or absence of jobs? Because there's a lot of risk, right? I think adding some skills is necessary. Just a degree that we are doing in engineering or whatever. Like I have done finance, but I think just the degree is not sufficient. Nowadays, you have to have some on-field experience that will add to your skill set. Only then people will find you employable. I think that is the problem, that people are not finding someone employable, and hence the unemployment. The elections are around the corner. What will be the issue that will decide your vote? I think more support, a little more support. I think we are already getting a lot of support. There are a lot of incubators already, and some more financial aid through the government schemes, maybe with or without some collaterals, but easy to get it. Being I'm into a deep tech, I require MIDC area, and wherein the rents are quite higher. So if at all in that domain government help comes in whatever way, like making a rate little bit cheaper for a starting and or budding entrepreneurs, it will be a great help, I think. Even in our case, the agriculture university fees and research institute fees are very high. So for any startup company to submit such high amount, so it's really impossible. So if we are getting some subsidies related to, we know that we have done a genuine research, our products are having excellent results. But another hurdle we have to cross is that related to the getting certification and licensing, which is the toughest part in our case, because lot of fees is being involved. So if we are getting something subsidy or something like that in that case, so it will be quite easier, because quite easier for any startup company who is working in the agriculture sector.